वेलकम बैक टू एनएचपीएस। 2-3 बार इंटरनेट में बात है अभी व्यवधान now it is okay and if it is okay please confirm। आपको मैं चैट बॉक्स से बताएं कि ये बिल्कुल सारा बाधा रहित है इंटरनेट और आई एम ऑन टू दैट। Dear aspirants, I was discussing, consider the following statements regarding Wildlife Crime Control WCCP. So this is very important, WCCP. So Wildlife Crime Control B. Now the first statement is, it is a statutory multidisciplinary body established under the Prevention of Cruelty to Animal Act 1960। दूसरा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण है, इट्स फंक्शन इज टू एस्टैब्लिश ए सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक। और तीसरा, इट्स फंक्शन इज टू कलेक्ट एंड कोलेट इंटेलिजेंस related to organized wildlife crime activities। How many of the above statements are correct? तब आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट सही हैं। A1, B1, C all three and D none। So dear aspirants, इस प्रश्न का उत्तर होगा only 2 statements are correct। Now under section 38 of the Wildlife Protection Act 1972, it is mandated to collect intelligence related to organized wildlife crime activities and provide this data to the state and other enforcement agencies for taking immediate action to arrest the criminals. Hence, statement 1 is incorrect and statement 3 is correct. Dear aspirants, statement 2 is also correct because along with this, its function is to establish a centralized wildlife crime data bank. So we have 2 statements correct, and the first statement, that is, it is a statutory multidisciplinary body established under the Prevention of Cruelty to Animal Act 1960. This statement is not correct, dear aspirants। तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपने इस प्रश्न को समझा और आपने तदनुसार इसको उत्तरित किया। Dear aspirants, तो consider the following: population explosion, animal grazing, झूम कल्टीवेशन, मिनरलाइजेशन और 5वां इंडस्ट्रियलाइजेशन। हाउ मेनी ऑफ द above are the cause of deforestation? ये बताना है आपको कि इनमें से कौन कौन से डिफोरेस्टेशन के कारक है। A only 1, B only 3, C only 4 and D all 5। Dear aspirants, ये पांचों के पांचों डिफोरेस्टेशन के कारक हैं। So our answer should be D all 5। We are familiar with the reasons of deforestation। The main reason is population explosion, due to which the need for wood and fuel wood increases, and increase in the number of animals leads to increase in grazing, charagah चाहिए। Forests are destroyed due to increase in livestock, and dear aspirants, forests are now there is more grazing in forest areas with easy access। झूम cultivation or shifting cultivation in northeastern India and Orissa has also made large areas of forest barren। In essence, it is a low energy budget and low investment subsistence farming system using mineralization and recycling of minerals। So dear aspirants, our industrialization is also responsible for deforestation। So dear aspirants, our answer is D, that is all 5 are responsible for deforestation। Now, parasitism. Consider the following statement. Number 1, the parasite always kills the host। The parasite always kills the host। Second,
Tapeworm found in intestine of pig is an example of parasitism. Third, parasitism occurs when two organisms interact with each other, but while one benefits, the other is harmed. How many of the above statements are? These are correct. A1 is 1, B1 is 2, C all three, and D none. So dear aspirants, अब आपको बताना है इसमें क्या आंसर होगा. प्लीज ट्राई. लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर. परशुराम जी, आप क्या मुझे देख रहे हैं? निशा पांडे, आर यू देयर? प्लीज लेट मी नो if you are attending the class. Please answer this question. This question is very, very simple. Yes, Nisha is attending the class and Parsuram ji is not attending. So please answer this question. Very simple question. So here, the first statement is not correct. The parasite always kills the host. This is not correct. Okay, parasitism is a relationship between two species. In this relationship, one organism lives on or inside the body of another organism. The host is usually weakened by the parasite as it depletes the host resources that the host uses to nourish itself. However, the parasite is unlikely to kill the host. Hence, statement 1 is not correct. Dear aspirants, 2 and 3 are correct. So our answer should be B. That is only 2 statements are correct. Let us move to this very important questions related to environment. पर्यावरण से संबंधित इस प्रश्न पर हम विचार करें. When was the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES implemented? ये काफी आसान क्वेश्चन है. A 1963, B 1975, C 1981 and D 2016. So dear aspirants, our answer should be B, that is 1975. The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora came into force on July 1975. This treaty was adopted in the year 1973. The purpose of CITES is to ensure that international trade, import, export of a specimen of animals and plants covered under CITES does not jeopardize the survival of the species in the world. So, dear aspirants, our answer should be B. Now, consider the following statements. We have 3 statements. Number 1, ecological niche is the unique functional role or place of a species in an ecosystem. एक बार फिर से सुनना होगा. Ecological niche, NICHE, is the unique functional role or place of a species in an ecosystem. Now the second statement, knowledge about a species, a specific needs is important if we have to conserve the species in their native habitat. और तीसरा, no two species are alike. How many of the above statements are correct? A only 1, B only 2, C all 3 and D none. तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइए. काफी आसान सा प्रश्न है. अब नीचे क्या है? Niche is the unique functional role or place of a species in an ecosystem. It describes all the biological, physical, and chemical factors that a species needs to survive, remain healthy, and reproduce. So, statement 1 is correct. Second is also correct, and third is also correct. Yes, Nisha, good answer. C is the answer. Ecological niche is the unique functional role
or place of a species in an ecosystem. Knowledge about a species, specific needs is important if we have to conserve the species in their native habitat. And third, no two species are alike. So our answer should be all the three statements are correct. So dear aspirants, today we have discussed 10 questions, but in three shifts, because time and again I was disturbed due to the interrupted MCQs, interrupted MCQs. So dear aspirants, इस तरह से धैर्य के साथ और बिल्कुल मनोयोग के साथ आप अगर क्लास करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी. सो डियर एस्पिरेंट्स, आइए देखें कुछ ऐसे प्रश्नों के तरफ भी हम आपका ध्यान ले जाएंगे जहां पर ऐसे प्रश्न हैं जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं. और यस, कुछ प्रश्नों पर हम दृष्टिपात अवश्य करेंगे. और यस, अब जो राज्यसभा के चुनाव हुए हैं अभी, उसमें क्रॉस वोटिंग हुआ. अब क्रॉस वोटिंग का जो एक कानूनी पक्ष है, जो उसका लॉफुल स्टेटस है, तो उसके बारे में हम लोग काफी इम्पोर्टेंट के साथ उस पर चर्चा करेंगे. अब क्रॉस वोटिंग क्या है? ये तब होती है जब विधायक पार्टी लाइन से अलग होकर किसी अन्य पार्टी को अपना मत प्रयोग कर देते हैं, तो ये होता है क्रॉस वोटिंग. तो इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक. और ये भी प्रश्न में पूछा जा सकता है डियर एस्पिरेंट्स. तो इस तरह से क्रॉस वोटिंग और जो कुछ भी घटनाएं हमारे इर्द गिर्द घट रही हैं, तो उन पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए. आइए देखें, विथ रेफरेंस टू इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी. ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी, FERRY. Consider the following statements. Number 1, it is a 24-meter catamaran designed by Cochin Shipyard Limited for service in Varanasi. Second, it emits only pure water as a bioproduct and operates on hydrogen fuel cells. Which of the statements given above is correct? A, only one, B, two, C, both, and D, neither one nor two. So dear aspirants, both the statements are correct. तो ये हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड. वर्चुअली का मतलब क्या है? फिजिकल रूप से नहीं, वे अपने कार्यालय कक्ष में होंगे अथवा निवास कार्यालय में होंगे और वहीं से उन्होंने बटन दबाया. दिस इज वर्चुअल इनॉग्रेशन. सो वर्चुअली इनॉग्रेटेड इंडियाज इनॉग्रल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी. The vessel constructed by Cochin Shipyard Limited (CSL) is designated for service in Varanasi, Uttar Pradesh. It is a 24-meter long catamaran design and can accommodate up to 50 passengers in its air-conditioned area. Hence, statement 1 is correct. The hydrogen fuel cell powered vessel operates without conventional batteries. It houses 5 hydrogen cylinders capable of carrying 40 kg of hydrogen, facilitating 8 hours of operation. Hydrogen fuel cells generate electricity by harnessing the chemical energy stored in hydrogen, emitting only pure water as a byproduct. The vessel aligns with the हरित नौका. हरित नौका, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसका नाम आपको जानना होगा. हरित नौका इनिशिएटिव बाय और फिर
मिनिस्ट्री का भी नाम जानना होगा तो उसको भी आप लिख लें, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटर वेज। तो ये काफी जरूरी था, इसलिए हमने आपको ये बताया। एमिंग फॉर ग्रीनर ट्रांजिशन इन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन, सो स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट। सो डियर एस्पिरेंट्स, आपने पूरे धैर्य के साथ मुझे सुना और अपनी तैयारी को अगले पड़ाव पर आप पहुंचाने का काम किया। सो डियर एस्पिरेंट्स, यहीं पर आज का ये प्रसारण हम समाप्त करेंगे। टुमारो इज संडे, लेकिन कल फिर और कोशिश करेंगे लैपटॉप से ही करने का प्रसारण, ताकि कोई बाधा उत्पन्न हो। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। लेट मी से गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, डियर एस्पिरेंट्स।